Hi everyone. So in this video we are going to do HELOT company question from section B of Kaplan kit of F5. So question first requirement is, which of the following statement would the finance director have used to explain HELOT company board with the what benefit were adopting a target costing approach so early in the game life cycle? So let's first read out the scenario. What the scenario is telling: HELOT company develops and sells computer games. It is well known for launching innovative and interactive role playing games, and its new releases are always eagerly anticipated by the gaming community. Customers value the technical excellence of the games and durability of the product and packaging. HELOT company has previously used a traditional absorption costing system and full cost plus pricing to the cost and price its product. It has recently recruited a new finance director who believes the company would benefit from using a target costing. Means previously company has adopted a traditional approach to calculate the cost of the product. Now due to the new finance director who have been appointed, according to him the target costing would have a benefit using while calculating the cost of the product. They are keen to try this method on the new game concept called Spartan, which has been recently approved. Okay, means approved by the NED or ED or board of director. After discussion with the board, the finance director undertook some market research to find out customer opinions on the new game concept and to assess the potential new games offered by competitors. The results were used to establish target selling price of 45 for Spartan and the estimated total sales volume 350,000 units. HELOT company wants to achieve a target profit margin of 35%. So we do have given the information regarding the new game. Okay, so basically part 1 of this question does not belong to the any of the paragraphs. So basically it's about what the benefit the target costing approach will give. Okay. So sorry. So in the first statement it has been told that cost cost will be split into a second. So cost will be split into material, system and delivery and disposal category for improved cost reduction analysis. So basically this first statement is explaining the material flow cost accounting, where the cost will be split into the material, system and delivery and disposal categories. So this is not related to the target costing. Okay. Second is that customer requirement for the quality, cost and time skills are more likely to be included in decision on product development. Obviously, cost, target costing, what we used to do is, first of all we determine the product specification, and in the market we used to after that in the market we used to find out the target selling price of the similar product from okay, and from that target selling price means the what the computer is charging on that product, company used to deduct their desired profit margin in order to get the target cost, and the company will then calculate its estimated cost, and after that if there is difference between the estimated cost and target cost, which is called cost gap, company will try or adapt various ways to reduce those gap. Okay, so one of this is obviously customer requirement is not compromised. Company will try to fulfill the customer requirement regarding its cost or the quality or time skills. Okay, so this is obviously the benefit, right? So next, its key concept is based on how to turn material into sales as quickly as possible in order to maximize net cash. So this is basically the concept of throughput approach. Okay, where the मटेरियल यूज करने के बाद जो भी मतलब इनपुट आएगी उसको जल्दी से जल्दी सेल्स करके हम लोग
नेट कैश को मैक्सिमाइज करेंगे. सो दिस कॉन्सेप्ट विल बी एक्सप्लेन बाय द थ्रूपुट अप्रोच. ठीक है, तो ये भी नहीं रहा. नेक्स्ट, company will focus on design out cost prior to production rather than the cost control during live production. Obviously, in target costing have a great impact on the design stage to reduce the cost, and this statement particularly related to the target costing कि कंपनी फोकस करेगी डिज़ाइन कॉस्ट पे, सो दैट कि उसका कॉस्ट उस डिज़ाइन स्टेज पे ही फोकस करेगी, क्योंकि उसको कॉस्ट रिड्यूस करना है ना, और वो भी प्रायर टू प्रोडक्शन, नॉट इन द प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद में उस चीज़ पे ध्यान देगी. सो दिस इज ऑल्सो बेनिफिट. सो 2 and 4. ओके, what is the forecast cost gap of the new game? Okay, so while reading the paragraph we got the information of calculation from the here. The result will establish to a target selling price of 45 for Spartan. So target selling price is, question is 246B. Okay, so now target selling price equal to $45 per unit. Okay, for the Spartan. And estimated total sales volume. So here total sales volume is 350. Okay, just wait. Sales volume. Sales volume is 350 1 2 3 unit. So total revenue equal to, multiplying these two we will get the revenue, and desired margin that company required is, it's given the HELOT company wants to achieve a target profit margin of 35%, right? So इसको multiply कर देंगे total revenue से, we will get our desired margin, है कि नहीं? So okay, so forecast gap per unit पूछ रखा है, new game. Okay, so now desired margin we got it. Now it's time to calculate target cost. Target cost, and how do we get that? By subtracting total revenue and desired margin. Okay, okay, so we got our target cost, and it's for the whole unit. Now target the cost per unit. So per unit, how we will get that? By dividing the sales volume is per unit. Okay, now we will calculate estimated cost. Okay, and we do have given the information here. Okay, now direct material I will write in the shortcut $3 per unit. Direct labor 2.50, then direct machining 5.05. Okay, so now setup all cost we will include 0.45 per unit. Inspecting and testing we will include this as well. Okay, so it's 4.30. Okay,
Now this all is regarding the production cost, and we will take non-production as well. So we have a designing and salary technology. Okay. Oh, designing, it's 2500 for the whole unit. Okay, and we have to calculate for the one unit, and it has taken 30 common, and total unit produce is 350,000. So is, we got it for the one unit, right? So this is for the production, and now we are calculating for the non-production. Okay, then come manufacturing. Sorry, it's marketing consultant. Okay, so it's 1700,000, 1 2 3 divided by again the unit we produced, which is 350,000. Okay, and after that distribution, got it? So 1400, 1 2 3 divided by again the unit we produce is 4. Okay. So now total estimated cost is, here we can calculate total estimated cost. Okay, so we got some 31.3. So now cost gap is difference between the cost gap equal to difference between the total estimated cost per unit divided by target cost per unit. So subtracted by minus target cost per unit. So cost gap is 2.05 per unit. Okay, so this is, I hope, clear. Okay, so next question is, the board of the HELOT company has asked the finance director to explain what activities can undertaken to close a cost gap on its computer games. Which of the following would be appropriate ways for the HELOT company to close a cost gap? Please tick the in the box in the table below as appropriate. Buying the cheaper low grade plastic for the game dishes and cases. So here बाइंग चीपर इज राइट. हम लोग को कॉस्ट रिड्यूस करना है, ऑब्वियसली हम लोग चीपर बाई करेंगे, बट लोअर ग्रेड नहीं बाई करेंगे, क्वालिटी को थोड़ा ना हम लोग को डालना है. सो बाइंग चीपर करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वगैरह यूज करेंगे, बट इट शुड नॉट बी द लोअर ग्रेड, राइट? सो दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट. Using standard component wherever possible in the production. या दिस इज द करेक्ट. अगर स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा वन टाइम एक्सपेंस है, बट ऑब्वियसली हमारा वेस्ट रिड्यूस होगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा, और ठीक है, और वेस्टेज रिड्यूस हुआ तो हमारा ऐसे ही इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला जो भी कॉस्ट होगा वो भी रिड्यूस होगा. तो हम लोग को कॉस्ट, ये गैप को रिड्यूस करना है ना, कॉस्ट रिड्यूस करके. सो दिस इज ऑल्सो द एप्रोप्रिएट वेज टू क्लोज ए कॉस्ट गैप. थर्ड, employee may employ more trainee game designer on lower salary. सी, मैंने कल के वीडियो में बताया था, आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन डील करते वक्त, कि टारगेट कॉस्टिंग में हम लोग को लाइक वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट इन ऑर्डर टू क्लोज द कॉस्ट गैप. एंड आई हैव बिन share the various ways to how can we reduce this cost. First was the reducing number of component, है ना, like proper training given to the staff. and even though हम लोग मानते हैं लो
पे द स्टाफ को भी यूज़ करके कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, बट दे शुड बी गिवन ए प्रॉपर ट्रेनिंग, अदरवाइज क्या होगा हमारा लाइक वेस्टेज ज़्यादा होगा तो और कॉस्ट बढ़ेगा, प्लस इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा. So in third statement it is only told that we should employ or hire or trainee at lower salary, but they didn't talk about any like salary, training, so this is not appropriate. ठीक है. So fourth, use the company on online gaming website for the marketing. सब ठीक है, हम लोग गेम इनिशियल कॉस्ट हाई होगा, बट क्या बोलते हैं धीरे धीरे करके इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट गैप मतलब वन टाइम एक्सपेंस है, इसका बेनिफिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट. सो इससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट गैप भी कम हो सकता है. सो दिस वन इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएट वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट गैप. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट 4 नंबर. Which of the following statement is true? The direct labor cost per unit has been based on the expected learning rate of 90%, but now the finance director has realized that 95% rate should be applied. See, this question belongs from the learning curve. ठीक है, लर्निंग जो हमारा गैप जो है ना आगे के चैप्टर से रिलेटेड है, वहाँ पे क्या बताता है कि लाइक अगर हमारा लर्निंग रेट जितना बढ़ेगा ना उतना कॉस्ट इंक्रीज होगा, और जितना कम होगा हमारा कॉस्ट उतना ही कम होगा. कैसे? देखो ऐसा होता है ना, जैसे कि हम लोग कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते हैं ना, व्हेन वी यूज टू डू द एनी न्यू काइंड ऑफ वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स ऑब्वियस इट्स गोना बी टेक ए टाइम, बट व्हेन वी यूज टू गेट फैमिलियर विद दोज काइंड ऑफ वर्क हमारा टाइम भी कम लगता है. जैसे जो एक एग्जांपल लेती हूँ, जो मेहंदी लगाते हैं, ठीक है, मेहंदी लगाते देखते हो ना दुल्हन वगैरह को, वहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, जो न्यू बिगनर है उसको ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट धीरे धीरे जब उसका हाथ बैठ जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, वो वही काम को पहले 1 घंटा ले रहा था तो ना वो अब कुछ ही लाइक 15 to 20 मिनट्स लेते हैं, है कि नहीं. सो यहाँ पे क्या हुआ, उसने लर्न कर लिया, सो यहाँ पे उसका कॉस्ट भी कम मतलब कम हो जाएगा. कॉस्ट से मतलब उसका जो भी इनिशियल लगानी पैसा तो आएगा ही आएगा, है ना. बस मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि एक चीज़ याद रखना, जिससे लर्निंग रेट बढ़ेगा, परसेंटेज यहाँ पे बढ़ रहा है, इसमें आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, रिड्यूस हो रहा है तो वो कॉस्ट भी रिड्यूस होगा. तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन में बोल रखा है टारगेट कॉस्ट के बारे में और कॉस्ट गैप के बारे में. ठीक है, तो लर्निंग रेट बढ़ेगा मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़ेगा, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़ेगा मतलब आपका कॉस्ट गैप भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. तो ये डिक्रीज वाला ऑप्शन तो गया, इंक्रीज वाला बच गया. अब रहा टारगेट कॉस्ट. अब टारगेट कॉस्ट रिमेन सेम या डिक्रीज? टारगेट कॉस्ट रिमेन सेम, ये डिक्रीज नहीं होगा. हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी इसका स्टेप में पढ़ा होगा आपने टारगेट कॉस्ट का, कि फर्स्ट वी डिटरमाइन द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, देन वी यूज टू डिडक्ट द नहीं, देन आफ्टर वी यूज टू डिटरमाइन द कम्पिटिटिव प्राइस इन द मार्केट, उसमें से हम लोग डिजायर्ड प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन वी विल गेट द टारगेट कॉस्ट. एंड जो भी हम लोग कुछ करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट पे करेंगे टू मिनिमाइज द कॉस्ट गैप, नॉट ऑन द टारगेट कॉस्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. Okay, so 5. HELOT company is thinking about expanding its business and introducing a new computer repair service for the customer. The board had asked if target costing could be applied to this service. Which of the following statement regarding service and using of the target costing within the service sector is true? The purchase of service transfer honor to the customer. ये प्रोडक्ट के केस में होता है, मैन्युफैक्चर के केस में होता है, सर्विस इंडस्ट्री के केस में नहीं. सर्विस में क्या होता है कि हम लोग ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, वी कांट ट्रांसफर द ऑनरशिप टू द कस्टमर. सो दिस इज द फॉल्स. P. Labor resources use is high in service related to the material requirement. Obviously हम लोग को लाइक सर्विस में देखोगे तो बहुत सारे लेबर ही काम करते रहते हैं कि नहीं, वहाँ पे लाइक मटेरियल रिक्वायरमेंट कम होता है, इनटेंजिबल होता है ना. सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना. सो सी, स्टैंडर्ड सर्विस कैन नॉट बी प्रोड्यूस एंड सो टारगेट कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड. ये तो बात सही है कि स्टैंडर्ड सर्विस कैन नॉट बी प्रोड्यूस, बट टारगेट कॉस्टिंग स्टिल यूज हो सकता है. यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड द कम्पिटिटिव प्राइस इजीली, बट हम लोग रीजनेबल प्राइस फाइंड आउट करके उस पर हम लोग टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, बट वी कैन अप्लाई टारगेट कॉस्टिंग इन सर्विस एज वेल. सो दिस इज फॉल्स. Last, D. Service characteristics include uniformity, perishability, and intangibility.
ऑब्वियसली सर्विस का फीचर है आपका इंटेंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, साइमल्टेनियसली, हेट्रोजीनियसली, बट यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये सेम नहीं होता है। ऑब्वियसली मुझे जो सर्विस देगा आपको देगा, दैट विल बी डिफरेंट, नॉट द सेम। तो इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू केमिकल फ्री क्लीन कंपनी।